बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुसरत और आप देख रहे हैं कौम की आवाज़। और आज कल सबसे ज़्यादा कौम जो ख़बरें सुनना चाहती है या देखना चाहती है या जिस हवाले से फ़िक्रमंदी है ईद के दिनों से ही लेकर अब तक, वो है फ़लस्तीन। और फ़लस्तीन के मुसलमानों के हवाले से जो कंसर्न है पाकिस्तान में ओवरऑल, उसको सामने रखते हुए हमने बेतहाशा उसमें प्रोग्राम्स किए हैं। कोशिश की है कि वॉइस ऑफ नेशन के फ़ोरम से मुख्तलिफ मौक़िफ़ आपके सामने आ सके। और आज के प्रोग्राम में भी हमारी कोशिश है कि वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या वो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो ह्यूमन राइट्स पे काम करते हैं, वो फ़लस्तीनियों के लिए क्या काम कर रहे हैं और इस वक्त फ़लस्तीन में क्या हो रहा है, इस हवाले से जानने के लिए हमारे साथ फ़लस्तीनी तज्ज़ियाकार और सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, जलाल अल फरा साहब। उनको हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, खैरियत से हैं आप जलाल साहब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। और फ़लस्तीनियों की खैरियत के हवाले से हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त वहाँ? जी अल्लाह का शुक्र है, अभी हालात तो बिल्कुल सन्नाटा है फिलहाल। अल्लाह शुक्र है कि बस जो जंग है वो फिलहाल तो बंद हो गई। क्या ये किसी मुद्दत के लिए सीज़ फायर किया गया है? इसमें कुछ सोचा जा रहा है या इसके हवाले से कोई ऐसी पेशगोई है जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए, ये मुद्दत के बारे में मैं वाज़ेह अल्फाजों में बता दूं आपको कि इस चीज का कोई मुद्दत नहीं होता है, इस चीज का कोई गारंटी नहीं है। इसराइल दोबारा फ़लस्तीनियों पे हमला कर सकता है किसी भी वक्त। इस चीज का कोई गारंटी नहीं। जी, तो क्या अभी कोई लाया अमल वहाँ सोचा जा रहा है? क्योंकि जाहिर है ये बात आज की तो नहीं है। 2007 में भी हमने सुना, 8, 9, 10, 14 में फिर हमने हमले देखे, आज 21 में भी हम वही बात कर रहे हैं। तो क्या इस बारे में फ़लस्तीनियों में कोई ख़ास फीलिंग ऐसी है या कोई ख़ास सोच उजागर हो रही है? देखिए, इसका तो फ़लस्तीनियों का इस वक्त सोच और फ़लस्तीनियों का ये हमारे जो इस वक्त सोच है कि वो ये है कि हमारा जो ये जंग बंदी हुई है ये तो एक टेम्परेरी अर्जी है। हमारा मसला फ़लस्तीन का मसला जब तक जो फ़लस्तीन का कॉज है जब तक मुकम्मल प्रॉपर तरीके से हल नहीं किया जाएगा तो ये मसला चलता रहेगा। फ़लस्तीनी आवाम अभी तक मुतमईन नहीं है। अभी भी आबाद लोग फ़लस्तीन के आवाम में खौफ आरास भी मौजूद है। अभी भी लोग किसी भी वक्त एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करता है कि क्या हमला हो जाए। जी, इसका क्या हल है जलाल साहब? क्योंकि अब तो हर फोरम पे यही बात की जाती है कि हल पे बात की जाए, इंटरनेशनली भी हल पे बात की जाए। हल पे बात नहीं होती है, बस ये तनाज़े पे बात होती है, इस जंग पे बात होती है, मजालिम पे बात होती है। हल क्या है और हल कैसे निकल सकता है? आया निकल भी सकता है या नहीं? देखिए, हल तो मौजूद है ना जी, हल तो मौजूद है। हल ये है कि जो करारदाद मंजूर हुई है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से और जिस पे पूरा दुनिया इत्तेफाक कर रही है, मिसाल के तौर पर जैसे करारदाद है जो 242 है, उस पर इसराइल को उस करारदाद पर अमल करने का पाबंद किया जाए ना। इसराइल से इस करारदाद पे अमल दरामद करवाया जाए ना। इस करारदाद का मतलब ये है, मुख्तसर है, कि 2 आज़ाद रियासत है, फ़लस्तीन के और इसराइल के। अब देखिए, फ़लस्तीनी भी इस बात में भी राजी है कि 242, जबकि इसराइल का तो कोई नाम ही नहीं है। इसराइल एक काबिज़ है, इसराइल का मुल्क का कोई नाम ही नहीं है। फिर भी हम भी इस बात में अभी भी एग्री है कि जी ठीक है, 242 रियासत कायम हो, तो हम भी इस पे एग्री हैं। जी, लेकिन ये इसको प्रेशराइज नहीं किया जा रहा। और जिस तरह कहा जाता है कि अमेरिका की तरफ से पूरा ताउन हासिल है इजराइल को, ये भी एक वजह है जिसकी वजह से ये मामला हल नहीं हो रहा और इजराइल अपनी ही हद दर्मी लेकर आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल वजह फरमा रही है आप, सही फरमा रही है। देखिए, उसमें मैं न ही अमेरिका को कसूरवार ठहराऊंगा और न ही इसराइल को। अच्छा, ये सुन के आपको हैरत होगी, बिल्कुल, इसलिए मैं नहीं ठहराऊंगा क्योंकि इसराइल तो वैसे ही एक काबिज़ है, वैसे ही है दुश्मन है। तो वो तो जो कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं ना। मुझे जो हम ब्लेम जो कर रहे हैं मुसलमानों पे कर रहे हैं, मुसलमान ममालिक पे कर रहे हैं, मुसलमान ताकतों पे कर रहे हैं, जो अपने मुसलमान भाई के लिए, अपने क़िबले अव्वल के लिए मस्जिद अक्सा जो क़िबले अव्वल भी है और हरमैन जो जिसका
ویلیو بالکل خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کی طرح ہے، اس کے لیے وہ لوگ کچھ نہیں کر رہے. ظاہر ہے جب آپ چور کو اپنے گھر میں چھوڑ دو گے تو وہ تو چوری کرے گا نا سر. جی بالکل. سو اس کے اس وقت اگر میں آپ سے جلال صاحب یہ پوچھنا چاہوں کہ فلسطین میں لوگوں کی معمولات زندگی نارمل ہو چکی ہے، بچے اسکول جا رہے ہیں، کیا کاروبار کھل چکا ہے، کیا وہاں اطمینان کی فضا ہے، یا خوف و ہراس کے بارے میں تو آپ نے بتا دیا کہ وہ ابھی بھی وہاں پر ہے، لیکن کاروبار زندگی کے کیا حالات ہیں؟ دیکھیے بالکل میں نے جیسے عرض کیا آپ سے کہ عوام مطمئن نہیں ہے، ابھی بھی لوگ خوف و ہراس وہاں پر موجود ہیں. میں جس سے بھی بات کرتا ہوں، جس کو دیکھتا ہوں، وہ ابھی بھی خوف کے عالم میں ہیں. تو اسرائیل کو ہم جانتے ہیں، یہ مطلب ان لوگوں کو بے اعتبار کرنا سب سے بڑی غلطی ہے. تو آپ کا سوال کا جواب میں مکمل کر دوں کہ نہ ہی کوئی صحیح طریقے سے وہاں پر زندگی چل رہی ہے، نہ ہی کوئی اس طرح کوئی کاروبار، کوئی بزنس، کچھ نہیں ہے. بالکل میں نے جیسا عرض کیا کہ خاموشی، سناٹا. جلال صاحب ایک آخری بات بتائیے گا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا سوشل میڈیا پہ کہ جتنے نوجوان لڑکے لڑکیاں یا باقی لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا تھا ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی، اور یہ تصاویر بہت وائرل ہوئیں. یہ سوچی سمجھی ہوئی کوئی اشتراک سے یہ مسکراہٹ تھی، یا یہ کوئی جذبہ تھا جس کی مسکراہٹ تھی، یا یہ کیا بات تھی؟ ہر تصویر میں جس کو اسرائیلی فوج نے اپنے قبضے میں لیا ہے اس فلسطینی کے چہرے پہ بہت اطمینان اور مسکراہٹ تھی. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے میڈم. دیکھیے یہ اسرائیلی جو قابض ہے 73 سال سے فلسطینیوں کو توڑنا چاہ رہے تھے، فلسطینیوں کا جو ہمت ہے، جو حوصلہ ہے، اس کو توڑنا چاہ رہے تھے. تو یہ ہمارے جو مسکراہٹ ہے، یہ ان کو اور جواب ہے کہ ہمیں آپ کے تشدد سے، تمہارے تشدد سے اور تمہارے اس ظلم اور بربریت سے ہم ٹوٹنے والے نہیں ہیں، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. آپ حیران ہو جائیں گے، میں آپ کو بتا دوں ایسے ایسے فلسطینی نوجوان جن کو باقاعدہ اسرائیلی کورٹس عدالتیں ان کو 4 عمر قید سزا سناتی ہیں، پھر بھی وہ ہنستے ہوئے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سزا سن لیتے ہیں. صحیح. پاکستان کے کردار سے آپ مطمئن ہیں اس پوری سچویشن میں؟ یہ سوال، میں اس سوال کا انتظار میں تھا. دیکھیے پاکستان کا کردار میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مطمئن ہیں، بالکل مطمئن ہیں. اور میں نے اگر آپ کی توسط سے ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں آپ کی توسط سے ایک شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں. فلسطینیوں کا پیغام، میرا ذاتی پیغام نہیں ہے. دیکھیں سب سے پہلے بات، کچھ لوگوں نے، جب میں نے ریسنٹلی، شاید آپ کو پتا ہوگا کہ میں نے جناب عمران خان صاحب کو ارطغرل کا لقب دیا تھا. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ میں جلال محمود صحافی فلسطین نے کہ عمران خان صاحب کو ارطغرل کا لقب دیا تھا. تو اس کی تھوڑا سا میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے بہت سے لوگوں نے تنقید کی ہے کہ آپ نے عمران خان صاحب کو اتنا بڑا لقب کیوں دیا ہے؟ کیا آپ کو عمران خان واقعی میں ارطغرل نظر؟ میرا جواب یہ ہے جو میں پورا عوام کو میں سنانا چاہتا ہوں آپ کی ناظرین کو، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو اگر موقع دیا جائے، اگر اندرونی اور بیرونی جو بلیک میلر ہے اگر وہ عمران خان صاحب کو کام کرنا دے تو ارطغرل کی طرح اس کا نام بھی سنہری الفاظوں میں لکھا جائے گا. دوسری بات جو شاہ محمود صاحب کے لیے کچھ لوگوں نے بھی تنقید کی کہ آپ نے شاہ محمود صاحب کے لیے آپ نے صدام حسین، دیکھیے صدام حسین بھلے کیسا بھی ہو، جیسا بھی ہو، میں نے اس سن سے کہا تھا صدام حسین، کیونکہ میں اور فلسطینی عوام صدام حسین کو ایک دلیر بہادر لیڈر سمجھتے ہیں. تو آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو دلیری، جرأت مندی کو دیکھ کے ہم نے ان کو صدام حسین کا لقب میں نے دی ہے. باقی میں آخری بات کہوں، پاکستان کا جو رول ہے بالکل ہم اس سے مطمئن ہیں. پاکستان کی جو سفارتکاری کا مہم ہے
जो मिशन है वो बिल्कुल हम मुतमईन हैं। जिंदगी मैं फिर दोबारा दोहराना चाहता हूँ, दुनिया छोड़ दे, दुनिया हमें भी छोड़ेगी तो हम मुतमईन हैं कि पाकिस्तान फलस्तीनियों का साथ नहीं छोड़ेगा। जी इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जलाल साहब आपके वक्त का और ये तमाम तर गुफ्तगू का। जी ख़वातीन हज़रात, और हमने कोशिश की है कि हम एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव शामिल करें फ़लस्तीन के हवाले से, और उसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल द वे फ्राम साउथ अफ्रीका एमनेस्टी इंटरनेशनल की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर शहनीला मोहम्मद। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शहनीला। वालेकुम सलाम नुसरत। हाउ आर यू? मैं बहुत ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच। जी, आप और शहनीला उर्दू में भी बात कर सकती हैं, बट ऑब्वियसली बिकॉज वी आर टॉकिंग इन एन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, और इनके कंफर्ट को सामने रखते हुए वील ट्राई टू मेक इट बायलिंगुअल और मोस्टली वील टॉक इन इंग्लिश। सो शहनीला, थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग this time for the interview and for this overall purpose. I would want to know what is the recent update regarding the Palestinian issue if we talk in context of Amnesty International. Well, as you know, Nusrat, Palestine, the occupied territories, went through 11 days of deadly hostilities. We know that the death toll was 232 dead in Gaza, 12 dead in Israel. We also know that there was a ceasefire between Israel and Hamas that took place on the 21st of May. Now, our experience as Amnesty International is we've seen these ceasefires coming over and over again, and our belief is that a ceasefire alone is not enough, that the international community and particularly the criminal court, the International Criminal Court, has got to do something more substantial about this. Yeah. So any response from their side, because you have been working on it not only in this year but you have been working on the issue since 2014. So any response from their side as yet? Well, yes, we were heartened to see that the International Criminal Court responded and said that they are investigating what has happened over, these recent attacks. But the problem is, Nusrat, that, from 2014, they have been investigating. And, again, in 2019, they said that they were going to be looking into the issue. And, what we're putting pressure on as Amnesty International is that the time has come now for the International Criminal Court to lay some charges, to actually take some action. That, investigations it's got to go beyond investigation into holding people to account. Israel has violated international law consistently. Of course, as Amnesty International, we try to look at it from a very neutral perspective. And, we have been on the ground, we've documented cases, and we've seen that, Hamas, and I know it's hard for people who are supporters of Palestine to hear this, but Hamas also has violated international law by firing weapons into civilian areas that are not, guided. So, from our side, yes, the greater violations are on the Israeli side, but we're saying to the ICC that they've got to take action, but also we've got to start looking at the whole Palestinian issue in its completion. There's been a blockade since 2007, an illegal blockade, which has caused the Palestinians a huge amount of pain. There's no water, there's no food. I mean, it's an absolutely inhumane situation. And, we've got to stop, sweeping things under the carpet and really stand up against this brutality. Do you think that this matter is that big or not comprehensible, or there is any other reason? Because you are mentioning 2007 and then you have been working through this cause, and then 2014 you went to the ICC, and now again you are referring the case and your overall research to them, but even then there is no probe into it whatsoever. So after all these years, you think this matter requires that much time for the international organization or the international court of justice to decide? Well, I think, Nusrat, those of us who live with a conscience, those of us who are human rights activists, can never, ever stop
working on the Palestinian issue until the Palestinians are free. And, we have to keep on applying pressure on the international organizations. Now, look, the reality is... International Criminal Court, since they are not probing much into it, since they are not saying much about it, so is it justified that they have taken these many years to actually respond? No, it's not justified at all. And, the fact that they, haven't even responded to the 2014 attacks is unacceptable. And, we see Palestinians dying all the time. And so, no, I think it's not acceptable. But I also think, that we also have to look at who is supporting Israel. I mean, Israel has the support of the United States. Neither the United States nor Israel are signatories of the International Criminal Court. And however, Nusrat, in international law, any country that is a signatory of the ICC can bring a case forward and can call on the ICC to urgently take action on these war crimes, which we as Amnesty have declared as potential war crimes. And so, even though Israel and the USA, who are their biggest supporters, have not signed up to the International Criminal Court, the other members can do something. So my question then is, why is Pakistan or other Muslim countries not doing this? Why are they not standing up and forcing the ICC, which they are members of, to do something about this? Okay, this is a very important question that you have raised through this platform, because people have been talking about it and people are worried actually, and these questions are coming up. Why not the Muslim and Islamic states are talking about it? They are only wondering what to do about the situation, or maybe they are just putting forward their reservations about the situation, but nothing concrete has come up as yet. So what is the next step of Amnesty International, if you would want to discuss about that regarding this situation? Well, we are now at the United Nations Human Rights Council. We are pushing for them to break what you've also referred to as a cycle of impunity, that, nobody's ever held to account when there are attacks, when Israel violates international law on the occupied Palestinian territory. And we're pushing for the international community to launch an investigation parallel to the investigation that we're calling for on the from the ICC. We really, because if the ICC is not going to take action, then we want the UN Human Rights Council to take action. And so we're saying, let's do our own investigation. Now, Amnesty has been on the ground. We have documented a number of cases where very clear violations. So, for example, and you've seen it all over the media, Nusrat, I don't have to tell you this, where entire families have been wiped out by missiles. There have been no military structures around them. I mean, Israel continues to say that, the Hamas and the military organizations are hiding behind the civilians. But and we have been on the ground gathering evidence. We have not seen evidence of that. And so we have put forward this evidence to the ICC. But what we're saying now is we cannot keep on having this cycle where every few years there is an attack and then nothing. And those lives just continue to be lost with no sort of justice. And also, the situation in Palestine has got to change. The blockade on Gaza has got to be uplifted. And the international community has got to make sure that this happens. So as Amnesty International, we are hitting it from all fronts. We know that, the plight of the people in Gaza, even before the attack. Yeah, I'm so sorry for the interruption, but do you think that the UN Human Rights Commission would do anything regarding this? Because we have had the experience of Kashmir with them. They have been quiet about it. Sometimes they just release a report about it, and that's it. So do you think going towards them and pushing them to do something regarding the situation would do any good to the Palestinian people? Well, Nusrat, what other options do we have? These are our international human rights bodies. And I feel like, again, I go back to my point that the members of these bodies, which include our Muslim countries, have got to stand up. And also countries like Saudi Arabia, for example, that are, very close to America, that have been, were one of the first countries to recognize Israel under Donald Trump. Muslim countries have got to hold their
them to account as well. You know, if we don't have a division in the Muslim world in the way that we do, we would see a lot more justice for the Palestinian people and for the Kashmiris. But, you know, unfortunately, our Muslim country governments will not stand up. We have one or two of them that stand up. But if they showed a united front in the same way that the countries that support Israel do, we would see a lot more movement and we would see a lot more justice for the people of Kashmir and the people of Palestine. Yeah. So, Shanila, my last question to you. When you say that the Islamic states must stand up, what is your expectation? What do you want to, what message would you want to give to the Islamic State? How they show their presence to the world regarding these issues? Well, first of all, they have to stop being silent when it comes to these massive human rights atrocities. Secondly, they have to use their positions on these international bodies, whether it's part of the UN Security Council, whether it's the UN Human Rights Council, whether it's the membership of the International Criminal Court, to push for cases to be filed, and they have to be in support of the victims of these cases. And unfortunately, what we see is more of political wrangling and people being, drawn into politics. And let's be honest, you know, America uses its power over these countries. So what we're saying is that stand up and fight for what is right, because that is the right thing to do. Thank you so much, Shanila, for your time and for all this information. We expect you to join some other time too regarding the same subject. Thank you so much, Nusrat. I really appreciate you giving me the space and this time. Thank you. जी ख़वातीनो हज़रात, ये गुफ्तगू आपने सुनी और एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या काम कर रही है, आईसीसी का इसमें क्या रोल हो सकता है, यूएन ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरह अपना पावर प्ले कर सकता है या नहीं कर रहा है, इस्लामिक स्टेट्स को जिस तरह से शनीला ने बोला कि किस तरह वो अपनी प्रेजेंस का एहसास दिला सकती हैं, जलाल अल फरा साहब ने जिस तरह पाकिस्तान के हवाले से बात की, पाकिस्तान के रोल के हवाले से बात की, वो सब आपके गोशगुजार हमने किया। अगर आपका इसमें कमेंट है तो आप हम तक ज़रूर पहुंचाइए। हमारी कोशिश ये होगी कि हम वॉइस ऑफ नेशन के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आप तक फ़लस्तीनियों की आवाज़ पहुंचाते रहें। आप अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।